हाँ, fine. So let's start or let's continue with the discussion which we have started yesterday. So in yesterday's class, we have discussed the non-tax revenue of the government. So in non-tax revenue, we have seen that there are some revenues of the government apart from taxes. So as I told you in the beginning that the government budget consists of three important accounts, that is the revenue account, expenditure account, and the borrowing account or loan account. So today I will be discussing with you the expenditure account of the government. But before I start with the expenditure account, so can anybody tell me which components are included into the revenue account of the government? Government के revenue account में कौन सी चीजें included होती हैं? Yes, Simon. Direct tax. Simon, can you hear me? Am I audible to you? Yes, sir. Direct tax, indirect tax, or Check. Sagar, what are the components of the government budget? So there are two components. One is direct tax and another is indirect tax. And non-tax revenue is also there in the revenue account. Okay, Mustafa. Yes, sir. There are two components in the government budget, sir. One is revenue and another is expenditure. In revenue, there is a two government take the from two types of taxes. One is called direct taxes and another called is indirect taxes. In direct taxes, government get individual taxes for the from the salaried person and the corporate tax and for capital gain tax, property tax, and indirect taxes, sir. Government get GST, sir. Yes, continue. Yes, sir. And then non tax revenue, sir, from this investment, sir. Just Mustafa, continue. I can hear you. Sir, किया ना सर और एक बार एक्सप्लेन करूं? ठीक, चलिए. So the government budget, when government produces the budget, we have seen that there are two types of the accounts. This revenue and the revenue and expenditure. In revenue part, there is tax revenues and non-tax revenue. Within tax revenue, we have direct taxes and indirect taxes. And in non-tax revenue, we have seen the government receives the revenue in the non-tax part from the profit of the PSUs and the disinvestment, whatever the private companies, whatever the government companies are there, that these companies are privatized by the government, and that is what is called disinvestment. The government also receives money by auctioning the resources, natural resources as well as the material resources. So in this way the government receives money. तो government को इन अलग-अलग जरियों से government को पैसा मिलता है, उनको income मिलता है. This money government spends on various activities. So what is there in the expenditure account that we will try to understand? So in expenditure account, we have two types of expenditure of the government. Government spends money on in two ways. One is called planned expenditure and another is called non-planned expenditure. So government दो चीजों पे खर्च करता है. कुछ चीजें जो ऑलरेडी प्लान होती हैं, कुछ चीजों पे गवर्नमेंट खर्च करता है, और कुछ चीजें नॉन प्लान होती हैं, जिसे गवर्नमेंट को on the spur of the moment, or government has to spend it whenever the time arises or whenever the. So can anybody tell me what could be the planned expenditure or what could be the non-planned expenditure? Or before that, government को ये जो पूरा revenue मिलता है, whatever the revenue government is getting from the tax revenues, non-tax revenues, direct taxes, indirect taxes, penalties, auctioning, etc. So where does the government use this money? Yes, Sophia. Where does the government use the money which government has received? आप सभी को पता होगा ना, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करता होगा तो वो कहाँ करता होगा?
यस सर। सर वेरियस मार्जिनल जो सेक्शन होते हैं सर सोसाइटी के, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा इस्तेमाल करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेल्थ में, Like एजुकेशन में। infrastructure, like सर रोड और इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, अभी जो गवर्नमेंट ने भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू किया, देन मनरेगा स्कीम। okay, different schemes for development, right? Archana. Fine. So tell me exact, the names of the schemes or exact in which activity the government spends money. Government कौन सी चीजों के लिए खर्च करता है? I want the precise, the activity on which the government spends money. Yes, Saima. सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। Sobia, Shubhadeep, where does government spends money? Sir, where government get profit, sir, means capital expenditure. Got my question? Yes, sir. Fine. So government spends money for various activities. सभी को पता है, आप लोग देखते हो ना, इंडिया में ही रहते हो, गवर्नमेंट के पैसों का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हो. You use that money. So normally government spends money for building road, giving some assistance to the people who are in need, like जो disadvantaged section है society की, like old age people, widows, handicap. इन सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर स्कीम बनाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट खर्च करता है, रोड के लिए कुछ खर्च करता है, हॉस्पिटल के लिए कुछ खर्च करता है, एजुकेशन के लिए कुछ खर्च करता है. उसके अलावा गवर्नमेंट डिफेंस के लिए खर्च करता है. उसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज फॉर द फार्मर्स, फॉर द एजुकेशन, फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो. उसके अलावा और भी गवर्नमेंट कुछ जगहों पे पैसा खर्च करता है. कहाँ पर करता है इन सारी चीजों के अलावा? Subsidies, गवर्नमेंट की सैलरीज, डिजास्टर मैनेजमेंट. वेरी गुड. यस, डिजास्टर मैनेजमेंट में खर्च करता है. जब भी कोई डिजास्टर आते हैं, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी या वॉर, ऐसी चीजों में भी खर्च करता है. सैलरीज, वेरी गुड मुस्तफा. The salaries of the government employees, this is also one of the very important expenditure of the government. Sir, pension provide करता है. सब्सिडी सर. Very good. Okay. इसके अलावा इंटरेस्ट भी पे करता है गवर्नमेंट. यस सर, बोरोइंग किया, फॉरेन कंट्री से बोरोइंग किया, उसे इंटरेस्ट पे करता है. वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज लाइक फर्टिलाइजर सब्सिडी, वाटर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, एजुकेशन सब्सिडी, फूड सब्सिडी, राइट? खाने पीने के लिए जो फूड है उस पे फर्टिलाइजर सब्सिडी. यस सर, फर्टिलाइजर सब्सिडी. फर्टिलाइजर सब्सिडी. सो ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट स्पेंड मनी. लेकिन ये सारे जितने भी whatever the expenditure government is doing, this expenditure needs to be classified, it needs to be categorized into two types of expenditure. So all these expenditures are divided into two types. One is called planned expenditure and another is called non-planned expenditure. तो बेसिकली ये दोनों में फर्क क्या है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वेयर द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी टू क्रिएट सम असेट्स. So planned expenditure is that component of the government which expenses leads to or helps to increase the productive capacity in the economy. Economy की जो productive capacity है उसको बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे planned expenditure कहते हैं. जैसे कि रेलवे लाइन बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, या एजुकेशन के लिए स्कूल बनाना, या स्कूल के लिए खर्च करना, हॉस्पिटल्स बनाना, एजुकेशन, डॉक्टर एजुकेशन के लिए खर्च बनाना, इंजीनियरिंग के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट. इन सारी चीजों से क्या होता है? इससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है. As we have seen, and the ultimate aim of the economy is, to optimum utilization of the resources of the country. तो कंट्री के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ भी खर्च किया जाता है, that is called as planned expenditure or capital expenditure. So planned expenditure are those expenditure which are planned in advance. तो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उस प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, to increase the productive capacity of the economy,
there is already some plan made in advance. So anyone knows who used to make this plan to increase the productive capacity of the economy? मतलब इंडिया में ये इंडिया की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए एडवांस में कुछ प्लान किया जाता था, और ये एडवांस में प्लान कौन करता था? Any idea about it? Yes. Planning Commission. Right. So we used to have the 5-year plan. When India got independence in 1947, in 1950, there was a formation of Planning Commission of India, and this Planning Commission of India used to make the 5-year plans. 5-year plan मतलब क्या? कि आने वाले 5 साल में हम किसे प्रायोरिटी देंगे, कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देंगे, कहां पर डैम बनाएंगे, कहां पर रोड बनाएंगे, कहां पर रेलवे बनाएंगे, कहां पर कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कहां पर स्कूल बनाएंगे, या कहां कोई इंडस्ट्री शुरू करेंगे, कहां एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे. सो ऑल दिस थिंग यूज्ड टू बी डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन एडवांस. तो जो प्लानिंग कमीशन ने जो एडवांस में प्लान किया है उसको गवर्नमेंट यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, या गवर्नमेंट यूज्ड टू government used to make policy accordingly. So planned expenditure, those expenditure which are already planned in advance, and these planned expenditure leads to the increase of the productive capacity of the of the economy. So this planned expenditures creates asset. बस आपको ये ध्यान में रखना है कि those expenditure which creates assets are called as planned expenditure. All have understood? Which expenditure are planned expenditure, or which expenditure are called as capital expenditure? Capital expenditure are those expenditure which creates asset for the So capital expenditure are those expenditure which the government spends in advance planning, and which creates some assets for the economy. Example, जो government की जो अलग-अलग जो schemes होती हैं, the various schemes of the government like Young Narega, Skill India, Mudra, Health, कुछ schemes like प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, education के लिए सर्व शिक्षा अभियान, या education के लिए government is having various like midday meal scheme, the National Rural Health Mission, then Swachh Bharat Abhiyan, Startup India, Stand Up India, and Make in India. There are so many such schemes which are started by the government, which increases the productive capacity of the economy. That is what is called planned expenditure. Clear? All of you understood what is planned expenditure? Now, this planning used to be decided by the Planning Commission. Planning Commission was an institution in the government of India which formulated India's 5-year plans. It was a non-constitutional, non-statutory, and advisory body. Remember, the Planning Commission of India was a non-constitutional, non-statutory, and advisory body. It means that this body was not created in constitution. मतलब ये constitution में नहीं है. इससे कोई कानून बनाकर भी इसको नहीं बनाया गया. It was just that body was just created by passing a simple resolution into the cabinet. So this Planning Commission of India was just an advisory body. The Planning Commission used to give advice to the government. Ultimately, it was the government who used to decide whether to accept the suggestion given by the Planning Commission or not. So what can anybody tell me why the Planning Commission of India was not made a statutory status or not made a constitutional status? The Planning Commission को statutory status. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is not. Constitutional status क्यों नहीं दिया गया? या किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या स्टैट्यूटरी स्टेटस अगर दिया जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है या उससे क्या इम्पैक्ट? Is it clear now? Yes, sir. Now clear. Am I clear now? Yes, yes. Hello. Yes, sir. Now you. Am I audible now to all of you? Can you all hear my voice? Yes, sir. Yes. Now you are. Sorry, there was some network issue. Fine. So
प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया था 1950 में, दिस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया was not a constitutional body and it was not a statutory body. मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं थी और कोई कानून बनाकर भी इस बॉडी को नहीं बनाया गया था. The planning commission of India was just an advisory body. It means that कि whatever the advice is given by the planning commission of India to the government, it was just advisory in nature. Ultimately, the government used to decide whether to accept the suggestion given by the planning commission of India or not. तो जवाहरलाल नेहरू ने जब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया था 1950 में, जो 2014 तक to make the economic planning of the country, why this body was not converted into a constitutional body or a statutory body. किसी अगर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी बॉडी को अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या उस बॉडी को अगर स्टैट्यूटरी स्टेटस अगर दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? Just Sovia, any idea about it? Sir, can you repeat the question? If any body of in any post, if it is being given a constitutional status or a statutory status, then what is the impact of that change in the status? Like I told you, Planning Commission of India was not a constitutional body, neither it was a statutory body. Yes, Mustafa. सर आई थिंक जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है सर, अगर वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मैंडेट नहीं है तो सर वो उसके जो भी रिजोल्यूशन और जो भी है सर वो बाइंडिंग नहीं होते सर गवर्नमेंट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कराना. Which bodies? Constitutional bodies or non-constitutional bodies? The advice given by the constitutional bodies are binding or non-constitutional bodies are binding? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? हाँ सर. Okay. So the main reason that why the Planning Commission of India was not converted into a statutory body or a constitutional body, because if any body is constitution, उसको अगर constitutional status दिया गया है, इसका मतलब ये कि वो जो भी advice करेगा वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनली. अगर किसी बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया मतलब उसको लीगल स्टेटस दिया गया, तो लीगली द गवर्नमेंट हैज टू लिसन और हैज टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय दैट. तो इसी वजह से प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी रखा गया, उसको सिर्फ एडवाइजरी बॉडी रखा गया, बिकॉज जो भी एडवाइस दिया जाएगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर होगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. बट एनीवेज, the planning commission of India has played a very important role in the economic planning of the country. Till 2014 in India the economic planning was there. So there are total 12 5-year plans have been presented by the planning commission. But after 2014, the new election, after the general election, the new government, the new regime, the BJP government has decided to abolish the planning commission of India, and it has created a new body that is called Niti Aayog. Anyone knows what is the full form of Niti? Niti Aayog का full form क्या है? National Institution Transforming for India. National Institute for Transforming India. Planning Commission का रोल था to make the economic planning, but new government or the BJP government thought that कि ये प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके वजह से हमें कुछ नई बॉडी बनाने की जरूरत है. As we all know that there were so many such changes, drastic changes have been made by the government, the current government with respect
Hello. Hello, am I audible to all of you now? Can you all hear my voice? Yes, sir. Yes, Mustafa sir, you want to continue or shall I continue? Challenge. So, as I was discussing with you that the current government has abolished the Planning Commission, and it has created new body for the same purpose, that is for economic planning of the country. आवाज सुनाई दे रही है मेरी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this body was created. Now this Niti Aayog is also a non-statutory. Yes, sir. Yes, Mustafa sir. Sorry. Okay, can you all see the notes on the screen? Is it visible? Yes, sir. Okay. So Niti Aayog is also a non-constitutional, non-statutory body, and this body was also created by passing a simple resolution into the cabinet. मतलब नीति आयोग को भी कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, इसे भी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उसको हमारे पार्लियामेंट में कोई कानून बनाकर इसको नहीं बनाया गया है और ना ही उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मान्यता है. So this नीति आयोग is also an advisory body. तो पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो एडवाइस करता था इंडियन गवर्नमेंट को फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग, द सेम फंक्शन इज कंटिन्यूड बाय द नीति आयोग, बट द वे ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द नीति आयोग इज डिफरेंट देन द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द नीति आयोग एंड हाउ द नीति आयोग इज डिफरेंट देन द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया in terms of economic planning, in terms of mobilization of resources, etc., that I will discuss with you in the mains class. So coming back to the planned expenditure, so नीति आयोग के द्वारा या प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो भी एडवाइस किया जाता था to increase the productive capacity of the country, that type of expenditure is called as planned expenditure. So you can read it by yourself. This नीति आयोग को देखेंगे. Now next is called non-planned expenditure. Non-planned expenditure मतलब क्या? The expenditure which is not planned in advance, जो emergency situation में या जब जरूरत पड़ती है ऐसे situation में गवर्नमेंट को spend करना पड़ता है. So that non-planned expenditure is what the government spends on the so-called non-productive areas. Of course, this expenditure are non-productive areas like disasters, war, salaries of the government employees, the subsidies given for the various activities. These all are called as non-planned expenditure because these are not creating any asset. तो ऐसे एक्सपेंडिचर पे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है और इसी वजह से इसे हम कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. All have understood what is the meaning of non-planned expenditure? Is it clear? Am I audible to all of you? Can you all hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is why? Now, can anybody tell me why subsidies are also called as non-planned expenditure? आपके सवाल मन में सवाल आया होगा ना कि how subsidies can be called as a non-planned expenditure, like food subsidy, farm subsidy, fertilizer subsidy, subsidy on starting business. Why these are called as non-planned expenditure? Yes, Mustafa. बिकॉज सर सब्सिडी में जो पैसे दिए जाते हैं सर वो गवर्नमेंट को वापस से नहीं मिलते सर, वो स्पेंड होता है पैसा. तो जब गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बनाता है उसमें भी तो गवर्नमेंट को कोई वापस पैसा नहीं मिलता है. गवर्नमेंट जब स्कूल बनाता है उसमें भी वापस पैसे नहीं मिलता है. बिकॉज सर सब्सिडी में सर जैसे प्लान एक्सपेंडिचर में एक एस्टिमेट किया जाता है सर, वैसे सब्सिडी में एस्टिमेट नहीं किया जाता सर, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है सर. ओके, सब्सिडी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, ठीक है. उसके अलावा एक रीजन है कि व्हाई इट इज क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, बिकॉज़ सब्सिडीज डू नॉट क्रिएट एनी एसेट. उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है. गॉट इट? सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज आल्सो नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट. वॉर से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है. डिजास्टर पे गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा. आप मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट को डिजास्टर में मदद करना चाहिए नहीं मदद करना चाहिए? नेचुरल कैलामिटी जैसा करना चाहिए. अगर जरूरी होती है तो टू डिफेंड द लैंड ऑफ द कंट्री वी नीड टू हैव अ वॉर एज वेल.
गवर्नमेंट Yes, sir. एम्प्लॉयज की सैलरी भी देनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी क्यों देनी चाहिए? बिकॉज जब वो काम करेंगे तभी तो गवर्नमेंट काम शुरू हो जाएगा। Then there are certain important subsidies as well, like food subsidy, education subsidy, farm subsidy, etc. तो ये देना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में कहीं अगर ज्यादा पैसा खर्च होता है तो वो है सब्सिडीज। So that is why we need to discuss in detail about the subsidies, right? Anyone remember? BA सिविल सर्विसेज स्टूडेंट, किसी को याद है ये सब्सिडीज, ये जो टर्म है वो हमने कहाँ सुना था? Where we have heard this term called subsidies in the syllabus GS पेपर 3 में? राहुल लक्षात आहे का? GS पेपर 3 मध्ये हा टॉपिक कुठे ऐकला होता? सिलेबस डिस्कशन मध्ये. Unmute yourself and speak. राहुल, माझा आवाज ऐकू येतोय? Can you unmute yourself? Okay, so do we remember which topic is there in GS paper 3 related to subsidy? Yes, about farm subsidies. Right, various direct and indirect farm subsidies and issues associated with it, right? तो subsidies Yes, क्या sir. होते हैं? पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं. What are the subsidies? Subsidy is a transfer of money from the government to an person or entity. It leads to the fall in the price of the subsidized product. The objective of the subsidy is to bolster the welfare of the society. It is a part of the non-planned expenditure of the government. तो इससे में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यूरिया का कोई बैग है, अगर उसकी कीमत 1000 रुपया है तो छोटा फार्मर उसको खरीद नहीं पाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसे 500 रुपए देता है। 500 रुपए में सब्सिडी दी जाती है और 500 रुपए वो खुद से खरीदेगा। You must be hearing like what is the most famous subsidy in India? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्सिडी डिस्कस की जाती है या लोगों को पता है? Fertilizers. Gas subsidy. Yes, sir. सब्सिडी और गैस सब्सिडी, Gas subsidy, sir. गैस सब्सिडी। तो ये पहले जो गैस थी वो पहले उसका कॉस्ट जो था 1100 रुपए ये था पहले भी, लेकिन गवर्नमेंट 600 रुपए देता था और आपको 400 रुपए पे करना पड़ता था। तो वहां पर 600 रुपए गवर्नमेंट यूज्ड टू सब्सिडाइज, मतलब जो एलपीजी बनाने वाले, जो सिलेंडर बनाने वाले जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज को गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव 600 रुपीस एंड द कंज्यूमर यूज्ड टू गिव 400 रुपीस। तो एलपीजी को सब्सिडी दी जाती थी। अब वो सब्सिडी कंप्लीटली बंद कर दी गई है, या अगर मिलती भी है तो शायद 1 रुपया या 2 रुपया कुछ मिलती है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाई द सब्सिडी फॉर द एलपीजी इज बीइंग स्टॉप? गवर्नमेंट ने जो एलपीजी की जो सब्सिडी जो कम किया है वो अच्छी बात है या बुरी बात है? इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? शुड एलपीजी सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? Yes, Archana, what do you think? LPG subsidy should be given or should not be given? सर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब गांव वगैरह में Yes, Archana, continue. I can hear you. सर देना चाहिए, क्योंकि गांव में ना फिर मतलब वगैरह जो जलाते हैं वो कम शायद यूज करे उसका, कम हो उससे। ठीक है, साइमा, what do you think? LPG subsidy should be given or should not be given? देना चाहिए सर। क्यों देना चाहिए? जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वो कर पाएंगे। एलपीजी सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी को अभी जो बंद किया है गवर्नमेंट ने, मतलब धीरे धीरे सब्सिडी को फेज आउट किया गया और अभी पूरा कंप्लीटली एलपीजी सब्सिडी कंप्लीटली फेज आउट किया गया है। तो एलपीजी सब्सिडी अब नहीं मिलती और इसकी वजह से एक सिलेंडर की जो कीमत है वो 1100 रुपया भी बन गई है। तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? Yes, Mustafa, what do you think? Subsidy should be given to the needy people, sir. तो अभी क्या होता है, मतलब
जिन्हें नीड नहीं है उन्हें सब्सिडी दी जाती है? सर पहले जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सर वो सभी को दे रहा था सर, बाद में से उन्होंने कुछ मार्जिनल सेक्शन को टारगेट किया सर। उनको सब्सिडी जब दी जाती है तो उससे इश्यू क्या, उससे प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब अगर कोई पर्सन सर वो कैरी करता है कि अगर उसका मंथली इनकम अच्छा है, अगर वो 1100 रुपए अफोर्ड करता है तो वो खुद से ले सकता है। अगर जिसको जरूरत, अगर जो अफोर्ड नहीं करता उन्हें सब्सिडी देना चाहिए सर। अच्छा, तो प्रॉब्लम यही है इंडिया में, as you said that the subsidy should be given to the needy people. The problem is no, it is very difficult in India to identify who is needy one. कौन मुस्तफा? मतलब कौन नीडी है इसको समझना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। मतलब how to make a data or how to decide that who is in need and who is in not need. क्योंकि जब ऐसा कोई डेटा बनाने की कोशिश की जाती है, जब ऐसा कंपाइलेशन किया जाता है कि जो नीडी लोग हैं उन्हें ही एलपीजी सब्सिडी दिया जाए, जो नीडी लोग हैं उन्हें ही एजुकेशन सब्सिडी दिया जाए, जो नीडी लोग हैं उन्हें ही फ्री में हॉस्पिटल दिया जाए, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जिन लोगों को नीड होती है वो लोग उस लिस्ट में आते ही नहीं है, और जिन लोगों को वाकई में नीड नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका ही नाम उस लिस्ट में आ जाता है, राइट? तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो एक्चुअल में जो नीड है उन्हें मिलती नहीं है, और जिन्हें नीड नहीं है उन्हें वो मिल जाता है। Am I right? All of you agree with me? रिजर्वेशन का भी सेम यही मसला है सर। Yes, sir, you are right. You are the victim of reservation. इसी वजह से आप मुझे सुबह में पूछ रहे थे कि सर ये रिजर्वेशन कब खत्म होगा। So you give me the solution कि क्या किया आप? On one side you agree that जो लोगों को नीड है उन्हें सब्सिडी मिलना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर साइड यू आर सेइंग दैट कि जिन लोगों को वाकई में जरूरी है उन्हें नहीं मिलता है, और जिन्हें जरूरी है उन्हें नहीं मिलता है, और जिन्हें जरूरी है नहीं होता उन्हें मिलता है। गॉट इट? तो प्रॉब्लम क्या है कि सब्सिडी जब गवर्नमेंट देता है, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, एलपीजी सब्सिडी हो, फार्म सब्सिडी हो, या अलग तरीके के जो सब्सिडी होते हैं, उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट का जो सब्सिडी जाता है वो नीडी लोगों तक नहीं पहुंचता है, और जिन लोगों को जरूरत नहीं है उन लोगों को वो सब्सिडी पहुंच जाती है। तो देयर इज नो प्रॉपर टारगेटिंग, और देयर इज नो प्रॉपर, यू कैन से, द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द सब्सिडी इन इंडिया। तो उसकी वजह से मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होता है वो अननेसेसरी लोगों के लिए ही खर्च होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अभी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सब्सिडी को बंद किया जाए और उसको मार्केट बेस्ड बनाए। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक इलेक्ट्रिसिटी का लेकर एक आर्टिकल आया था, MBED, मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉर द डिमांड बेस्ड अप्रोच फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब rather than giving subsidies to the discom companies, subsidies to the consumer, जो मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से दिया जाए, राइट? बट देयर आर सर्टेन इश्यूज आल्सो एसोसिएटेड विद दैट, तो हम मेंस क्लास में इन डिटेल में उसको चेक करेंगे। सो कमिंग बैक टू द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज war, disaster, salaries, subsidies, all these are called as the non-planned expenditure of the government. So examples of the subsidies have also been discussed here, that LPG subsidy, food subsidy, education subsidy, solar subsidy, then irrigation subsidy and fertilizer subsidy. So tomorrow we will continue with the borrowing part of the government budget. Government जो borrow करता है, कैसे borrow करता है, क्या borrow करता है, और उससे associated जो अलग-अलग term है वो क्या है, that we will discuss in tomorrow's session. So we'll stop it here now. Good night to all of you. Take care. See you in the morning for the newspaper class. Thank you, sir.